हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि बाटू का जो 2022 का जो एंड सेम का जो पेपर है उसका हम आज आंसर की देखने वाले हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि if if sum and product of if sum and product of two complex numbers are real, so that those two numbers must be either real or conjugate. हमको उस पेपर में दिया है कि given sum and product of two complex numbers are real, and we have to prove those two numbers must be either real or conjugate. So देखते हैं क्या है इसका आंसर। पहले तो हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसिडर करना होगा। पहला हमने लिया है Z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2, and from given condition sum of two complex numbers are real. ये गिवन कंडीशन है। तो सम करते हैं इसका। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू ए हमने लेट किया हुआ है x1 plus i/1 plus x2 plus i/2 is equal to a, and then separate the real part and the separate the imaginary part. x1 plus x2 plus I in bracket y1 plus y2 is equal to a. Comparing on both sides, we get x1 plus x2 is equal to a. First give the first equation, and the y1 plus y2 is equal to 0. Means this is likewise x1 plus x2 plus I in bracket y1 plus y2 is equal to a है ना। तो इज इक्वल टू a प्लस 0 i हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका रियल पार्ट है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू a, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लो। And then from the second condition, product of two complex number are real. So Z1 into Z2 is equal to B. ये हम से कह सकते हैं। मीन्स B हम ए लेट किया हुआ है by multiplication we get this, that is the x1 into x2 plus I into x1 y2 plus I into x2 y1 plus I square into y1 into y2 is equal to b. But we know the value of the I square, and the value of the I square is -1. So put this value into that, we get this, and we have to separate the real term and the imaginary term. That is the real part and the imaginary part. We get this, and then comparing on both sides, we get x1 x2 minus y1 y2 is equal to b.
give the equation number 3, and the x1 y2 plus x2 y1 is equal to 0. We give the equation number 4, and form the equation number 2. We get the y1 is equal to y2, means the and our second equation is our second equation is y1 plus y2 is equal to 0, and from this we made, that is the y1 is equal to minus y2. Put this value into the equation number 4. We get this, and then take the common term of the y2. Then we give the y2 in bracket x1 minus x2 bracket close is equal to 0, and then means the y2 is equal to 0, and x1 minus x2 is equal to 0, that is the x1 is equal to x2. Put y2 is equal to 0 in the equation 2. Our second equation is y1 plus y2 is equal to 0. If we put the value of y2 is equal to 0, then we get the y1 is equal to 0, means we get the y1 is equal to 0, and also y2 is equal to 0. You can see that in that y1 is equal to 0, and also y2 is equal to 0. And then put this value in the z1 and z2. We get the z1 is equal to x2. Sorry, z1 is equal to x1 and z2 is equal to x2. And we know the x1 and x2 are the real. Therefore, we get the z1 and z2 are the real. Use of x1 is equal to x2 and y1 is equal to minus y2, and y1 is equal to minus y2. This we have to taken from the equation number 2, and then put these values in the z1. Then we get the z1 is equal to x2 minus y2. But we have the z2 is equal to x2 plus y2. This shows that the z1 and z2 are the conjugate of each other, and hence proved. Solve the equation x raised to 6 minus I is equal to 0 by using the roots of complex number. X raised to 6 minus I is equal to 0. This I taken into as the right side. We get x raised to power 6 is equal to I. Then x is equal to I raised to power 1 by 6, means the x is equal to 0 plus I bracket close whole to the power of 1 by 6, and in the polar form we can write this as it is 0 plus I to the power of 1 by 6 is equal to, in bracket r in bracket cos of theta plus I sin of theta bracket close to the power of 1 by 6. But we know the r is equal to under root x square plus y square is equal to
under root, and the x value is 0 and the y value is 1. Put this and then we get the under root 1 is equal to 1. We get the value of r is equal to 1. R called as the modulus and the theta is called as the argument. Then theta is equal to tan inverse of y by x is equal to tan inverse of 1 by 0 is equal to tan inverse of infinity is equal to pi by 2. And then put this value into this, but before the putting this value into this, we have to apply the general form, and the general form is the 2m pi plus theta and 2m pi plus theta, and then the put the value of theta, that is the pi by 2. After the putting value of the theta, and the theta value is the pi by 2. And then by the Moivre's theorem, but we know the Moivre's theorem is the cos of theta plus I sin of theta back close to the power of n is equal to cos of n theta plus I sin of n theta. It means that the power n is to be multiplied with the angle theta, and then we get this 2m pi plus pi by 2 upon 6, and then doing the cos multiplication, 2 into 2, that is 4, upon the 2m pi, there is nothing value, means there is 1, and then by the cos of multiplication, that is 2 into 2, that is 4, and 1 into pi, that is the pi, and then we get the 4m pi plus pi, and 2 into 6, that is the 2 into 6 is, that is 12, and then we have to put the value of the m, that is 0 1 2 3 4. Here you can say that I put the value of the m, that is 0 1 2 3 4 and 5. And one more important thing that is that our power, if the 1 upon n, then we put the value of n is n minus 1. मीन्स इसका मीनिंग ऐसा होता है कि जब हमारे पास पावर जो भी है, समझा लेट हमारे पास पावर है वो 1 अपन n, तो हम ये m की वैल्यू ही n माइनस 1 पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास पावर था वो 1 अपन 6, तो मैंने क्या किया, m की वैल्यू 5 तक थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने m की वैल्यू अप टू द 5 पर रखी हुई है। If you do not understand this, we take a example. Let we have a m. Sorry. Let we have a variable a, and that the power is the 1 upon 7, and then we have to put the value of m is the 0 1 2 3 4 5 and up to the 6, and only up to the 6.
पावर है कम करना है 1 से, एंड जो भी वैल्यू आती है वो वहाँ तक हमको यम की वैल्यू पुट करना है। वेन हमने यम की वैल्यू जीरो रखी तो हमें ए मिला, दैट इज 4 pi into 0 is the 0, plus pi is pi, therefore cos of pi by 12 plus I sin of pi by 12, and then the m is equal to 1. Put m is equal to 1 in this equation, then we get the 4 pi into 1, that is the 4 pi plus pi, that is the 5 pi, and then we get the 5 pi by 12 plus I sin of 5 pi by 12, and then similarly and then इसके बाद हम ऐसे ही यम के पावर इसमें पुट करते जाएंगे, और जो भी वैल्यू आएंगे हम यहाँ पर हरे लिखते जाएंगे, एंड फाइनल में जो भी यम की वैल्यू आती है 0 से लेकर 5 तक, वो हमें यहाँ पर लिखना है। cos ऑफ पाई बाई 12 प्लस आई साइन ऑफ पाई बाई 12, ये वैल्यू थी हमारी यम इज इक्वल टू 0 थी। सो हमें यम इज इक्वल टू 0 से लेकर यम इज इक्वल टू 5 तक से वैल्यू जो भी आए थे वो हमें यहाँ पर लिखना है, एंड उसके बाद लिखना है कि आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, मीन्स हमारे जो भी गिवन इक्वेशन था उसका है ए फाइनल आंसर ए। इफ यू वांट टू here you can see the, if you want to convert this 21 pi by 12 into the smaller angle, then you can easily convert this into the smaller angle also, and then the smaller angle is right in this, and then write the are the required roots of the given equation. So we will move the next question, that is the if tan of a plus ib is equal to ax plus iy, prove that first tan of 2a is equal to 2x upon 1 minus x square minus y square, and second tan of h2b is equal to 2y upon 1 minus x square minus y square. Given tan of a plus ib is equal to x plus iy, ये हमें गिवन दिया हुआ है, you can see here. ये जो tan है वो हमको ये जो tan है वो अभी लेफ्ट साइड में है, हमें वो tan राइट साइड में लेकर जाना है। जब भी हम लेफ्ट साइड से tan राइट साइड में ले जाते तो उसका इनवर्स हो जाता है, मीन्स tan इनवर्स। Therefore a plus ib is equal to tan inverse of ax plus iy. Give the equation number 1 and उसका कॉन्वर्स मीन्स उसका अपोजिट क्या आता है, a माइनस आई बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस आई वाई। हमें इसको इक्वेशन नंबर 2 देना है।
and then the add equation 1 and 2, we get the a plus ib plus a minus ib is equal to tan inverse of x plus iy plus tan inverse of x minus iy. Plus ib minus ib get cancelled. We get the 2a is equal to tan inverse of x plus iy plus x minus iy upon 1 minus in bracket x plus iy bracket close into in bracket x minus iy bracket close and big bracket close. हमको यहाँ पर हमने यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ किया है. फार्मूला कौन सा था? tan inverse of a plus tan inverse of b is equal to tan inverse of in bracket a plus b upon 1 minus a into b. ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है. to a is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square 1 minus in bracket x square bracket close minus in bracket of I y bracket close whole square bracket close big bracket close. आपको ये 2x कैसा आया ये आपको नहीं अंडरस्टैंड हुआ होगा और को अभी मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये 2x कैसे आया. यहाँ पर देखो आप प्लस आई वाई एंड माइनस आई वाई गेट कैंसिल. इसके वजह से x प्लस x आ गया 2x. एंड देन स्क्वेयरिंग करने के बाद हमें ए में मिलता है. बट हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है. आई स्क्वायर की वैल्यू है -1. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू है -1. सो आई स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है. सो हमें मिलता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड उसके बाद हमें है माइनस साइन से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है. तो हमें मिलता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड देन वी गेट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ द tan of 2a. This is our half answer and the remaining half answer you can see here below. जो पिछले वाले थे इक्वेशन थे वो 1 जो कि हमें उसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाम दिया था. वो हमें यहाँ पर उसका सब्सट्रैक्शन करना है. सो हमें मिलता है कि a प्लस आई बी माइनस इन ब्रैकेट a माइनस आई बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू tan inverse of x plus iy minus tan inverse of x minus iy. And then you can see here that the plus a and the minus a get cancelled, and then we get the 2ib plus ib get the 2ib. and हमें अगेन यूज करना है कि tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b. हमें यहाँ पर जो नेगेटिव वाला जो फार्मूला था ना हमें यहाँ पर वो यूज करना है. क्या था वो नेगेटिव वाला फार्मूला? tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b. मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं. And then 2ib is equal to tan inverse of in bracket x plus iy minus x plus iy upon 1 plus x square
माइनस आई वाई होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस एक्स एंड माइनस एक्स के कारण प्लस एक्स एंड माइनस एक्स गेट कैंसल and we get the iy plus iy, that is the 2iy. See here, and then the I square value is the minus 1. Put this I square value into this, we can get this, that is the x square plus y square, and then we get the 2ib is equal to 10 inverse of 2iy upon 1 plus x square plus y square. एंड अगेन हमें वो tan इनवर्स लेफ्ट साइड में लेके जाना है। जब भी tan यहाँ पर राइट साइड में tan इनवर्स है, तो हम जब भी लेके जाते हैं tan इनवर्स को लेफ्ट साइड में, तो उसका अपोजिट होता है, डेट इज द tan ऑफ। सो यहाँ पर हुआ है tan ऑफ 2ib इज इक्वल टू 2iy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट हमको पता है कि tan ऑफ आई थीटा का फार्मूला क्या है। tan ऑफ आई थीटा इज इक्वल टू आई tan ऑफ एस थीटा। tan ऑफ आई थीटा इज इक्वल टू आई इंटू tan ऑफ एस थीटा। आई जो है वो बाहर निकला हुआ है। सो ए वाला फार्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है, और हमें ए मिलता है आई इंटू tan ऑफ एच टू बी इज इक्वल टू 2iy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट यहाँ पर भी आए और यहाँ पर भी आए, सो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद tan ऑफ एच टू बी इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 देना है, और हमारा जो tan ऑफ 2a जो था वाला, इसको हमें इक्वेशन नंबर 3 देना है। एंड देन ये हमारा हाफ आंसर है। एंड tan ऑफ h2b इसको हमें इक्वेशन 4 देना है। ये हमारा रिमेनिंग हाफ आंसर है। एंड देन द इक्वेशन 3 and 4 आर द रिक्वायर्ड आंसर। आप हमेशा से याद में रखे जाए कि ऑलवेज राइट द फाइनल आंसर। ए वाला सेंटेंस आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। इसके वजह से आपको कई बार वन मार्क का फायदा भी हो सकता है।